Hi guys, welcome and welcome back to my channel D Stylish. My name is Arushi and I'm back with my another new video. टाइटल से आपको ऑलरेडी क्लियर हो गया होगा कि हम लोग बनाने वाले हैं DIY हाइलाइटर्स. आप सोच रहे होंगे कि मार्केट में तो इतने सारे हाइलाइटर अवेलेबल है तो भाई घर पे क्यों बनाना. ऐसा बहुत बार होता है जब हम लोग ऑर्डर करते हैं तो हमें कुछ प्रोडक्ट्स ब्रोकन मिल जाते हैं और उसका रिटर्निंग पॉलिसी भी नहीं होती है. मेरे साथ भी ऐसा हुआ और मेरे पास एक था पैलेट जो मेरा टूट गया था एंड उसका रिटर्निंग पॉलिसी भी नहीं था. सो मैंने उसका यूज किया है. और अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट में से कुछ पिगमेंट्स मिलते हैं कुछ इस तरह से. मैं आपको फोटो लगा दूंगी कहीं स्क्रीन पे. वो पिगमेंट्स इतने चीप प्राइस पे मिलते हैं और उसी के कंपैरेटिवली अगर हम लोग देखा जाए हाइलाइटर इज क्वाइट कॉस्टली अबव देन 500-600 अ गुड हाइलाइटर्स. और हम लोग वही लाके हम लोग घर पे भी इजीली बना सकते हैं और इन चीजें ऐड करके. और सारी चीजें आपके घर पे अवेलेबल होती है मोस्ट ऑफ. अगर आपके पास नहीं होंगी तो आपके नियरली ग्रोसरी शॉप में या फिर मेडिकल में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी. आई क्रिएटेड द 3 टाइप्स ऑफ हाइलाइटर, अ जेल हाइलाइटर, अ लिक्विड हाइलाइटर एंड अ लुमिनेटर. जो जेल हाइलाइटर होते हैं वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेट बोल सकते हैं या फिर बहुत ही पिगमेंटेड होते हैं. लिक्विड हाइलाइटर्स है जो आप अपने फेस पे भी यूज कर सकते हो, बॉडी पे भी यूज कर सकते हो और कोई पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए भी यूज कर सकते हो. और जो लुमिनेटर है उसे आप सेटिंग्स पे भी यूज कर सकते हो या फिर मुझे नेक पोर्शन को जब मैं ऑफ शोल्डर पहनती हूँ तो मुझे उसके साथ हाईलाइट करने के लिए बहुत अच्छा लगता है. सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मैंने जेल हाइलाइटर कैसे बनाया है. तो विदाउट डूइंग फर्दर लेट्स गेट स्टार्टेड. So first we'll need a paper just to cover your floor and just gather a pigment. Then I am taking this golden, silver and this pinkish pigment and then just mix them all. For the gel highlighter you need aloe vera gel and a container and this pigment. Put aloe vera gel into a container and then just add a pigment which you gathered in a paper and then just mix them together very well. You can change the ratio. I just taken a golden more and pinkish less. You can change the ratio with your convenient. After mixing this all, you can see this gel product will convert something like this and here's your gel highlighter is ready. For a liquid highlighter, you need any BB oil. I am just using this Johnson Baby. You need a glycerin, aloe vera gel, a water and an empty container. In empty container, I am just adding 1 tablespoon of baby oil, half tablespoon of aloe vera gel. You can take it more than this ratio, but this work for me. After that, 3 tablespoon of water. And that's it. You have to add the pigment in it and here's your liquid highlighter is ready. Just mix it as well because it takes some time to mix. For making this illuminator, I am mixing this 3 color of pigments and taking this empty container and just filling it with the half teaspoon of glycerin and after that just adding a water almost 3 to 4 teaspoon. After that just adding this pigment in it and you have to just shake your bottle very well and that's it. I am just transferring this solution in the spray bottle so I can easily apply it as a spray on my body and face. So you can see this solution like this. See guys how amazing this highlighter has been turned out. So the video is all about this only. If you enjoy this video, so please don't forget to subscribe my channel, give thumbs up
Leave comment and share with your friends. I will meet on another new video. Till then, stay tuned, take care yourself, and I will meet you soon. Bye.